Can you see the screen? Okay. Yesterday we discussed about dynamic initialization. Okay. Dynamic initialization of a variable. Dynamic initialization of a variable. Okay. You can see here this example. Okay. Now you tell me this value area. Okay. We are putting. We are putting the value. Providing the value for R here. Okay. Is it dynamic variable? Dynamic initialization of this variable area? Because we are also putting here the value for R here. In this example also we are putting the value for R here in the runtime. At the time of execution we are providing R value. Okay. So here this dynamic initialization of this variable area, we are telling this is dynamic initialization of variable. Which variable? Area. Okay. Area. We are saying. In this case also we are providing value for R at the time of execution. Okay. So can we say this is dynamic initialization of this variable area? Dynamic initialization means what? Providing value for a variable at runtime. Okay. Now you tell me which one is dynamic initialization? Second one or So first one? the second one. Why not first one? So because we have already initialized float area, and then Acha, we are float. Okay. We initialize float area means what value is initialized? so 0.0. That means not it is 0.0. The value is a garbage value. Garbage value, yes. Garbage value. Yes or no? Okay. One more thing. Yes. You must know this thing. Okay. This is an interview question. Okay. Why it is garbage value is assigned to area at what time? At compile time. Yes. Yes or no? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes. Okay. Okay. 1 second. Yes. This one R. Yes. This sorry. This okay. One more thing. This integer R. Okay. R value. R value. What is R value? R value is a garbage value. Yes or no? Yes. Yes, sir. Yes, sir. R value garbage value means this value will be assigned at what time? So compile time. At compile Compilation. time. Compile Okay. time. That is yes. So at compile time value for R is assigned. Okay. Okay. Here we are declaring float area. Yes. But we see here when we are writing area equal to this one 3.14 into R into R into R. That means what? This area value will be dependent on what? So hard. R. Is dependent on R. But here we have declared it. Yes or no? Previously. Float Yes. area here. So it has already taken a garbage value. When we will put R value at the time of run, okay, it is only overwriting area value. Yes or no? Some Yes. garbage value it has taken. Now it is overwritten. That means value for this R and area is assigned at the time of declaration, at the time of compilation. Yes? At the time of compilation. Yes or no? Yes. Whether Yes. it is garbage value or anything else. That is assigned, value is assigned at the time of compilation. But what is our, what we are studying? We are studying dynamic initialization. That means dynamic initialization means putting a value for a variable at runtime. Yes or no? So here if Yes. you see this example, R is integer type declaration. So what value it is taking? A garbage value at the time of compilation. Yes or no? Yes or no? When we are declaring this float area, but simultaneously we are using a assignment operator. Yes or no? Assignment operator means first right hand side will be evaluation will be done. Yes or no? Then that value will be assigned to left hand side. Yes? Yes, sir. Everyone is getting me? So this Yes. area value here now it is dependent on R. Yes? Yes. And when Yes, sir. R value is being given at runtime, that means
At runtime, area value is also been given. Yes. That's why value is assigned or initialized to area at runtime. That's why it is dynamic initialization. Everyone is getting? Yes, sir. Anyone is having doubts? और किसी का डाउट रहा इसके ऊपर? ये क्यों, ये मेरा डायनामिक इनिशियलाइजेशन क्यों नहीं हुआ एरिया? यहाँ पे एरिया मेरा डायनामिक इनिशियलाइजेशन क्यों हो रहा है? हाँ ना, कुछ तो बोलो. क्या हो गया? Should I repeat? Yes, sir. Yes, sir. तो वो रिपीट वाला चीज तो बोल सकते हो ना. Okay, you can see here. I am writing integer r. Yes or no? Declare r value. R is a variable of integer type that is being declared. Yes or no? So at the time of declaration, okay, it is declared, and here area it is also declared. Yes or no? Declared Yes, means sir. what? At the time of compilation, one value is being assigned to r as well as area. What value? Garbage value. Yes or no? Yes, sir. It is declared here. That means at the time of compilation, some value will be assigned to r as well as area, garbage value. Yes or no? So when Yes, some sir. kind of value is being assigned to r and area, okay, whether it is garbage value, it does not matter. That means this initialization of this variable is at compile time. Yes or no? Although we are giving value for r at runtime, but it is only the value of r is overwritten. Yes or no? Some garbage value is being taken previously. Now we are putting some values for r, and that's why area value is calculated. So area value previously it is taken garbage value. Yes, at compile time. So this is not dynamic initialization. Yes or no? Dynamic initialization means the variable will be initialized at the time of execution. Yes. Here this Yes, sir. area value is being initialized at the time of compile. Yes. Everyone is getting? But come to this example. Here r is declared. Here integer type, r is a variable of integer type. Okay. So some value will be assigned to r when at compile time, garbage value. Yes. Yes, Yes sir. or no? Okay. Come to here. When I am writing, okay, float area, that means area is declared as float. Yes. Yes. Okay. Here what we are finding is it is here there is no semicolon. There is a assignment operator. Okay. So we cannot say garbage value will be assigned to area, because there is one assignment operator. So when value will be assigned to area, once right side of the assignment operator will be evaluated. Yes or no? Yes, sir. So what is there in right side? 3.14 into RRR. What is R? What is R? That R value is given where? R value is given at the time of execution. RRR. So here this one dependent on this one. So area is at the time of run, when this value is being given, area is calculated. So previously no value for area is being assigned because it is dependent on R. Are you getting me? So that's why this area is dynamic initialization. Declare and initialize at a single line. Declare and initialize at a single line, and value for R is given at the time of run execution. Are you getting me? Yes. Yes, sir. Yes. That's why this one is dynamic initialization. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. Anyone having doubts? No, sir. Okay. So what about your? Oh, okay. Your lab teacher is Minaki madam, na?
Yes, sir. Yes, sir. Talked with Minak madam. I asked Minak madam regarding your programs because here very this is we have only taken 2-3 classes and it is at initial stage, and I asked her about your problem that she is doing C++ programs in the lab. Okay, madam told she explained and she started only very easy questions like C questions. Only C out and C in you use. She told very easy small programs and only C programs that is converted into C++ using C in and C out. And she also explained you, and you all told that you have learned it, you understood, all of you. Nobody told in your class that you didn't understand. All of you shook your head and told you got it, you understood. That then only she given you questions. And nobody also asks your doubts there. You all told you are getting. You must have asked her, na? You must have talked to her if you are not getting Yes, there. She explained in the class before giving question or not? Tell yes, me. sir. She did. Yes, sir. If she explained, then why you are putting issues? If you have any doubts, then you must have. You could have asked at that time. No, sir. We don't have any doubts regarding the lab. We have the doubts regarding this theory. How to declare class and all. Which one? Which one? Doubts at which place? Tell me. Hello? You have doubts at which place? In theory. Hello? Somebody just told, na? You don't have any doubts in lab, na? Any problem in lab? Or problem in lab? Or in theory? Hello? Sir, actually, sir, in the first assignment, we had to apply pointers and structures in C++. So it became little tough, sir, to solve the assignment. Ma'am, sir, the program ma'am explained it was we understood, but Actually other मेरे को बोलो questions क्या we could not प्रॉब्लम do नहीं it. नहीं एक्चुअली मेरे को बोलो क्या प्रॉब्लम हो रहा है लैब में कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है थियोरी में हो रहा है या लैब में हो रहा है थियोरी में मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है Yes, sir, जी, sir. नहीं मैं जो क्लास में यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ कहीं पे डाउट रहता है नहीं क्लास में नहीं सर लेकिन थोड़ा मतलब लैब में थोड़ा एडवांस हो जाता है ना तो मतलब असाइनमेंट में तो दिक्कत मैडम होती है। हाँ लैब में जो एडवांस हो जा रहा है यू आर टॉकिंग अबाउट आई एक्ट टू मैडम टुडे मॉर्निंग वी स्पोक अराउंड 25 मिनट्स तो मैडम बोले कि सर बच्चे तो मेरे को बोलना चाहिए मैं तो जो भी पढ़ाता हूँ जैसे पॉइंटर्स एंड स्ट्रक्चर्स वो तो सी में तुम पढ़े हो ना पॉइंटर्स तो मैडम बोले वो तो पढ़े हैं और मैंने तो एक्सप्लेन भी किया उसका बाद प्रोग्राम्स दिया अगर बच्चों को दिक्कत आ रहा था तो लैब में पूछना चाहिए था तुम लोग तो पूछे नहीं वहां पे हाँ बोल के आ गए इसलिए मैम ने समझा समझ में आया है हाँ लेकिन अप्लाई करने में मतलब थोड़ा दिक्कत होता है ना तो वहां पे लैब में पूछना चाहिए था ना देयर आर 2 प्रोग्रामर्स आल्सो ना 2 or 3 प्रोग्रामर्स लैब असिस्टेंट्स यस और नो टीएस टेक्निकल असिस्टेंट्स दे आर फॉर व्हाट मैडम इज देयर 3 पर्सन्स आर देयर तो लैब में अगर शी इज गिविंग यू क्वेश्चंस ओके and some issues or you are facing some difficulties you must have asked at that time पूछना चाहिए या नहीं बोलो Yes, sir. तो आगे से क्या करोगे लैब में पूछोगे ठीक मैं कोशिश करूंगा whatever I discuss here which portions I covered here I will tell her okay convey her कि this much portion I have covered in the class okay you carry out the lab accordingly ये मैं बोलूंगा बट व्हाट इज योर जॉब वो तो 2 क्वेश्चन समझाएंगे एक कांसेप्ट समझाएंगे उसका बाद 5 क्वेश्चन तो देंगे इट्स नॉट दैट कि ऑल 5 क्वेश्चंस विल बी इजी थोड़ा तो टफ रह सकता है एंड इफ यू आर नॉट एबल टू डू दैट इन द लैब यू आर फेसिंग डिफिकल्टी यू मस्ट हैव आस्क्ड एट दैट टाइम टू देम यस और नो? Yes or no?
टेल मी। हेलो, अरे बोलोगे नहीं तो चुप बैठोगे Yes, कैसे sir. होगा? हाँ, बोलोगे नहीं चुपचाप बैठोगे तो कैसे होगा? सर मेन प्रॉब्लम मतलब ऐसे है, लास्ट सर सेकंड सेमेस्टर में हम लोग को सर सी प्रोग्रामिंग शुरू किया था सर पढ़ाने, विश्वजीत सर ने सर पढ़ाना शुरू किया था। तो उन्होंने मतलब पूरा बेसिक से मीन्स क्या होता है इंट मेन और मतलब इस तरह से धीरे धीरे करके शुरू के 3-4 बार क्लास से सर वो लोग ने उन्होंने प्रोग्राम कराना शुरू किया। फिर उसके बाद सर धीरे धीरे करके वो आगे बढ़े। और हाँ। C++ प्रोग्रामिंग में क्या हो रहा है सर, बेसिकली मैम आ रही है डायरेक्ट पॉइंटर के प्रोग्राम शुरू कर दे रही है। तो नहीं अब नहीं नहीं C++ मैडम में सुनो, मैडम सी प्लस प्लस का क्या है ना, सी का जैसे कंसेप्ट जो गया जहाँ पे वो Yes, sir. रिपीट हो रहा है उसको तो और नहीं पढ़ाएंगे ना। सी प्लस प्लस का बहुत सारा कंसेप्ट है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड Yes, sir. कंसेप्ट बहुत सारा है, तो वो कब खत्म होगा? यू कैन नॉट जैसे सर एक्सपेक्ट। लेकिन एकदम अचानक से अगर इतनी स्पीड पकड़ लेंगे तो सर हमारे लिए भी प्रॉब्लम होगा सर, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में। एकदम लैब में इंस्टेंट अगर डायरेक्ट पॉइंटर्स एरे स्ट्रक्चर्स ये सब शुरू हो जाएगा, थोड़ा सा बेसिक से भी अगर थोड़ा देखो समझाते देखो सी करते एक एक देखो करके। सी प्लस प्लस सर कुछ क्वेश्चंस में मतलब बबल शॉर्टिंग ये सब भी है, तो कुछ लोगों को आता है पर सपोज मुझे नहीं आता है सर, तो ऐसा मतलब प्रॉब्लम होता है। हाँ सर, सर दिक्कत ये हो रही है ना कि जैसे आप उस दिन पढ़ाए थे C++ के स्टार्टिंग के डिफरेंसेस पढ़ाए थे और ये सब पढ़ाए थे, बट लैब में हम लोग गए तो लैब में डायरेक्टली सॉर्टिंग हो गया और स्ट्रक्चर हो गया, ये सब सर पढ़ाना शुरू। सॉर्टिंग मतलब कुछ लोग कर पाए पर हम लोग नहीं कर पाए, मतलब ऐसा मतलब प्रॉब्लम हो रहा था। तो नहीं कर पाए तो क्या हो गया? टेंशन क्यों ले रहे हो? नहीं कर पाए तो क्या हो गया, टेंशन क्यों ले रहे हो? सर इसीलिए सर मैडम असाइनमेंट्स भी मिलते मैडम हैं सर, सबमिट नहीं करते तो मैम भी नहीं बोलती नहीं है फिर। नहीं नहीं मैडम क्या बोले, मैडम ये बोले, जितना मैं बात कर रहा था मैडम बोले बच्चों का हमारे देखो असाइनमेंट में जितना क्वेश्चन था वो हो गया है नहीं, मैनुअल में जितना। यस सर। ओके, मैडम बोले उसका बाद क्या करेंगे तुम लोग, तो थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चंस दिए सो दैट कि जो भी बच्चों जिनको आता है वो थोड़ा ट्राई करोगे, जिसको नहीं भी आता है वो भी थोड़ा ट्राई करेगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है सी का क्वेश्चंस दिए वो तो दे सपोज यू लर्न इट, वो तो सी Yes, का sir. क्वेश्चन था, पॉइंटर का स्ट्रक्चर का, ये तो सी में पढ़ के आए हो। यू कैन नॉट ऑलवेज, जी सर। सी प्लस प्लस का तो कॉन्सेप्ट तुम बुक देखे हो ना, चैप्टर कितना है, यस सर। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का पूरा बेसिक है पूरा, और जावा में पूरा स्टार्ट होगा, ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट पढ़ोगे जावा में पूरा ऊपर से स्टार्ट होगा। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट कब पढ़ाएगा टीचर अगर सी पढ़ाएगा अभी? आर यू गेटिंग मी? सर शुरू से Yes, sir. पढ़ाने को नहीं बोला जा रहा, पहले लेक्चर में लाइक हमारा फर्स्ट सेमेस्टर था उसके बाद ऑफलाइन चले गए थे सर, हाँ। पहले क्लास में कम से कम रिवाइज तो करा दिया जाए डायरेक्टली क्वेश्चन देने की जगह। दिस वाज द टॉपिक। हाँ, मैं मैडम को आज भी बोला हूँ, मैंने बोला कि मैडम बहुत टॉप क्वेश्चन मत दीजिए, मैं उनको बोला है कि यही बोला गया कि थ्योरी में लाइक आप क्या किए थे उस दिन कि आप बेसिक इंट्रोडक्शन वगैरह कराए थे। मैं क्या करूंगा बोलो, तुम सोचोगे कि मैं पूरा स्टार्टिंग से नहीं लूंगा, मैं जाकर अंदर में घुस जाऊंगा क्या? हाँ तो वही आप इंट्रोडक्शन कराए थे, लेकिन मैं भी directly तुम्हें कहा- धीरे धीरे सेट करके लेके जाऊंगा ना, मेरा जहाँ पे कंसेप्ट स्टार्ट होता है उसका मैं वहां तक धीरे धीरे स्लोली लेके जाता हूँ ना, मैं डायरेक्टली लेके तुम्हें कॉन्सेप्ट के ऊपर डाल दूंगा क्या? बोलो, मैं तो अभी तक तुम्हें सीन सी आउट हेडर फाइल ये भी नहीं बोला है, नेमस्पेस एसटीडी ये कुछ नहीं बोला हूँ। हाँ सर वही चीज, और वहां पे भी डायरेक्ट क्वेश्चंस दे दिए गए कि ये करने, तो इसीलिए सर जिसे नहीं आता था वो सारे पैनिक कर गए। तुम लोग इतने बड़े हो गए, पैनिक क्यों कर रहे हो? कल लैब था क्या? हाँ सर कल मतलब बेसिक्स कुछ क्वेश्चन दिए थे बाद में करने के। बेसिक्स दिए ना। सुनो मैडम को जो भी दिक्कत है, देखो लैब तो मैं नहीं ले रहा हूँ, वो मेरा हाथ में है क्या? मेरा हाथ में क्या है? थ्योरी है। जो क्लास में यहाँ पे पढ़ रहे हो 100% अंडरस्टैंडिंग शुड बी देयर। मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो तुम्हें समझ में आना चाहिए, जितना कंसेप्ट है। बहुत सारे क्वेश्चंस में यहाँ पे करूंगा लैब में, थ्योरी में, पर प्रैक्टिस तो कहाँ पे करना है? लैब में करना है ना, यस और नो? यस सर। तो तुम्हें कहाँ पे बोलना चाहिए ये चीज? लैब में बोलोगे ना? लैब में सर। लैब में ये बोला जाता है कि थ्योरी में पढ़ा जाएगा, सर आप बोल रहे हैं लैब में पढ़ा जाएगा, सर हम लोग कहाँ पढ़े फिर? क्या हुआ? लैब में बोलेंगे तो थ्योरी का पार्ट है, आप यहाँ प्रैक्टिस करिए, हाँ जाता है, और थ्योरी में सर आप बोल रहे हैं लैब में करो, तो सर करे कहाँ फिर? नहीं, लैब में क्या करो करने के लिए मैंने बोला, लैब में प्रैक्टिस करने के लिए बोला ना। थ्योरी में जितना आएगा तो मैं पढ़ाऊंगा ना। अरे थ्योरी में जितना आएगा तो मैं पढ़ाऊंगा,
लेकिन क्वेश्चंस तो प्रोग्राम्स तो ऐसा नहीं है कि मैं 50 प्रोग्राम एक कंसेप्ट का ऊपर करा पाऊंगा, मैं एक दो क्वेश्चन कराऊंगा ना एक कंसेप्ट का ऊपर। और तो लैब में वो तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए 10 क्वेश्चन देंगे या नहीं देंगे? और 10 क्वेश्चन तो वो देंगे ना, दैट विल कंसिस्ट सम डिफिकल्ट क्वेश्चंस आल्सो। तुम क्या चाहते हो, सब इजी इजी देंगे प्रैक्टिस करने के लिए? ऐसा तो नहीं होगा ना। और कॉन्सेप्ट जो है जितना है तुम्हारा सिलेबस में मैं सब पढ़ाऊंगा। यहाँ पे जितना क्वेश्चन मैं कर पाऊंगा 150 200 मिनिमम 200 क्वेश्चंस प्रोग्राम्स में लैब में थ्योरी में कराऊंगा यहाँ पे। बट प्रैक्टिस कौन सा साइड में करोगे? वहां पे करोगे लैब में। तुम्हारा जितना है कॉन्सेप्ट सब मैं पढ़ाऊंगा। सर आप थोड़ा अगर कंसेप्ट समझाए तो उसके बाद थोड़ा कंपाइलर में थोड़ा सा रन कर दीजिए तो बेटर हाँ, अंडरस्टैंडिंग रहेगा देखो सर। मैं अभी तक प्रोग्रामिंग में आया हूँ क्या? मैं कैसे आऊंगा प्रोग्रामिंग करूंगा? मैं तुम्हें समझाऊंगा। सपोज मैं प्राइवेट डाटा मेंबर्स यूज करूंगा, एक क्लास यूज करूंगा, क्लास को बताया मैंने, एक डाटा मेंबर्स क्लास में डाटा मेंबर्स डिक्लेयर करूंगा, तो प्राइवेट सेक्शन में करूंगा या पब्लिक सेक्शन में? पहले तो समझाऊंगा उसका बाद प्रोग्राम करूंगा। मैं तो थोड़ा जितना प्रोग्राम करने के लिए जितना चाहिए तो उतना समझाऊंगा या नहीं? दो से दो तीन क्लास तो मेरे को चाहिए या नहीं चाहिए? डे वन से तुम बोलोगे मुझे प्रोग्राम करूंगा, तो कैसे प्रोग्राम करूंगा? गिव मी 2-3 class at least so that I can give you concept how you will write program, then only I will do some questions here. मैं उसको यहाँ पे ऑनलाइन एडिटर में क्वेश्चन करूंगा कंपाइलर में। तुम लोग तो डे वन से फर्स्ट क्लास से पैनिक हो रहे हो। मैं और 2 सेक्शन पढ़ा रहा हूँ, कोई पैनिक नहीं हो रहा है, बिकॉज आई एम टेकिंग द लैब। और 2 सेक्शन में ले रहा हूँ, कोई पैनिक नहीं हो रहा है, आई एम टेकिंग द लैब। वो आराम से कर रहे हैं, यहाँ पे जो मैं कर रहा हूँ वहां पे वो कर रहे हैं। थिंग इज दैट की और डिफरेंट लैब में हो तुम लोग, और पैनिक करने का कुछ नहीं है। क्यों पैनिक कर रहे हो? ओके सर। जो भी इश्यू होगा मैडम को वहां पे बोलो। मैं यहाँ पे थ्योरी में मैं हर जो भी कंसेप्ट है मैं कराऊंगा, जितना हो सके मैं प्रोग्राम यहाँ पे कराऊंगा, ऑनलाइन एडिटर में यहीं पे करूंगा। मुझे 1-2 क्लास दे दो, आज का क्लास दे दो, नेक्स्ट क्लास से यहाँ पे क्वेश्चन हर लैब में हर थ्योरी में 1-2 प्रोग्राम्स कर लूंगा एडिटर में, ठीक है? ऑनलाइन। तुम लोग ऑनलाइन एडिटर जीडीपी में कर रहे हो ना, या किस में कर रहे हो? VS कोड। VS कोड सर। बहुत सारे एडिटर है यहाँ पे, किसी में भी कर सकते हो। और ऑनलाइन यहाँ जीडीपी पे भी चलेगा सर। हाँ ऑनलाइन जीडीपी भी चलेगा सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलेगा। वहां पे बस तुम्हारा एक ही रॉन वाला ऑप्शन आता है, रॉन में क्लिक करोगे वही कंपाइल कर देता है, वही रन कर देता है। ये सर नो? यस सर। बस, और क्या है? अच्छा, what we discussed in the last class? Tell me. Declarations. Public keyword, public section defining, declaring data members inside public section of a class. ये हुआ था? यस हाँ? हाँ सर। यस सर। हो गया था? Okay. ये वाला प्रोग्राम कल जाके किए तुम्हारे एडिटर में? किए? ऐसे टाइप का ट्राई किया था सर। हाँ? हो रहा है? Yes. यस हो रहा है या नहीं हो रहा है? तुम क्या चाहते हो? ये वाला प्रोग्राम यहाँ पे बैठ के मैं एडिटर में दिखाऊं तुम्हें? ये चाहते हो? यस सर। यस सर। ओके। कर दे रहा हूँ, देखो। मैं एडिटर, ऑनलाइन एडिटर ही कर रहा हूँ।
1 second. Can you see the screen? Yes, sir. Okay. So here you can see already this much is already written. Okay. Header file is written using namespace std. Okay. What is this std? What is this namespace? Why we are using this header file? Okay. Then what is C in, C out? One class I need tomorrow. I think when your next class? When your next class? Friday. That class I will tell. I need Friday. one class. I need one class to explain all these things. I will explain. Okay. As from hello. Hello. Good morning. Huh? Okay. Okay, suppose we are using data members as public. Okay, as public. So code number, price, and quantity, 3 data members we are suppose using. Okay. Can you hear me? Yes, sir. So this is declared inside Yes, public section. This is declared inside, and this is end of class. So end of class. That means after closing parenthesis there will be semicolon. Okay. Then integer main. Okay. We will access the public data members through object. So we need to create object. We need to create object. Okay. What is the class name? So what is the class name? Class item. No? Class item. Okay. Then item 1. Okay. Then 1 dot code number equal to suppose some value. Okay. Then 1 dot
price equal to value. Okay, suppose 22.5. Okay, then 1 dot quantity equal to, and this is also integer type, suppose some value. Yeah, then we need to print it. Okay, cout 1 dot code number. Okay. Cout 1 dot price dot quantity. So class is class item. Okay, class name is item. Okay, then inside class data members are declared. Okay, what are the data members? Code number, price, quantity. Okay, and they are declared inside public section of the class. That means these data members are public data members. Then end of class, closing parenthesis, then followed by semicolon. Then inside main function, one is the object that is created for the class item. How to create object for class item? So class name space object name. Then we are going to initialize the public data members. We know object can access the public data members directly. So we are accessing 1 dot code number, 1 dot price, 1 dot quantity, and initializing. Okay, then we are printing cout 1 dot code number, cout 1 dot price, cout 1 dot quantity. Here, what is the value? 123. Okay, then 22.5, then 11. Okay, there is no space. If we put space here, then it will show us the result by putting space. Are you getting me? Yes, sir. Yes, sir. Anyone having any doubts? Ask me. You want this much I should do in the class? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. I should write some programs in the compiler, in the editor. Here. Yes, sir. So maximum only 1 or 2 programs I can do because I need to cover the theory also. Yes, sir. That's okay. Yes, sir. That's okay. That means the concept, huh? Yes, sir. I thought we are starting now. That's why. Okay. So can we proceed? This is okay. Then this one. Okay, this one private keyword. We discussed this thing in the class. Yes or no? No. Class. No, sir. Huh? Yes or no? Yes or no? Yes, sir. This is over in last class or not? Yes, Tell sir. me. It is over? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Then this one private member function. This one not over. No, sir. No, sir. So here you can see what we discussed. Private data members. Okay. Private data members cannot be accessed by object directly. Yes, or object cannot access it directly. Okay. So how private data members will be accessed? Private data members will be accessed through public member function. So here you can see they are private. These are private data members. This is public member function. Inside public member function, they are access and initialize. Yes. So here Yes, sir. object is accessing only public member function. So inside public member function, this code number, price, and quantity is there. Sir, Yes. sir, can member function be private? Member function can be private. So then, sir, how we will use it? Here only private member function.
Sir, because a private member function cannot be accessed by the object directly, so how we will be? It will. See, I am going to discuss. You अच्छा, need to अच्छा, have. You need to have patience ना. First day से अगर बोलोगे मुझे एक ही दिन में सब बता दो तो मैं कैसे बताऊंगा? नहीं सर मैंने हाँ? sorry अभी तो slowly we are going ना moving. एक साथ सब बता दूंगा तो clumsy नहीं हो जाएगा. You will Yes, be sir. only confused. तो have patience, go slow. मैं slow में जाता हूँ. तुम लोग क्यों fast जाते हो? वो तो मुझे पता नहीं. Go slow. कहाँ मैं छोड़ के तुम लोग को जा रहा हूँ? अभी तो 6 months हम लोग हैं. तुम भी हो, मैं भी हूँ, एक साथ हैं. Yes, sir. जितना भी तुम्हारा डाउट्स है सब मुझे पूछोगे, सब बताऊंगा. ठीक है? जितना भी आएगा डाउट्स वो मुझे बोलोगे. बस प्रोग्राम प्रैक्टिस जो है दैट डिपेंड्स ऑन यू ओनली, बिकॉज प्रोग्रामिंग एक ऐसा चीज है कि कोई किसी को मतलब ये नहीं दे पाएगा. वो डिपेंड करता है खुद का ऊपर. इफ यू प्रैक्टिस यू विल गेट बेनिफिट. इफ यू डोंट प्रैक्टिस then it's of no use. Okay, teacher only can give you the concept. Teacher only can make you understand, okay, the concept. He can go for few examples, but it depends on yourself only. The more you will practice, programming will be your game. Okay, so that's all for today. Is that okay? Yes, Yes, sir. sir. yes sir Yes, sir. Yes, sir. So I can tell you once again, in lab wherever you are facing difficulty, you